15. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, दो शेल्स हैं, दे आर फुलफिल्ड. सो 3s ऑर्बिटल and this is 3p. Clear? Now phosphorus has to form 5 covalent bonds, so it must have 5 half-filled orbitals. So what happens? This one orbital from 3s is shifted to 3d. This is 3s, 3p and 3d. 3d is empty, but one electron get excited to the higher level. And this is the excited state. One electron in S, there are 3 electrons in p orbitals and 1 electron in d orbitals. So these undergoes sp3 dehybridization. sp3 dehybridization की वजह से it has shape trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Trigonal means triangle shape, planar shape और bipyramidal यानी कि दो pyramids होंगे, one above the plane and other below the plane. तो इसकी जो shape है किस तरह से आ जाएगी? ये phosphorus central atom, 3 covalent bonds in the trigonal shape, just like this. And there are 2 equatorial bonds in this way. There are 2 ये pyramids हैं. तो ये जो planar है ये किस तरह से होंगे? एक प्लेन में है, जैसे ये मैं हाथ दिखा रही हूँ अपना, यहाँ पे फास्फोरस है और एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, यानी कि एक ट्रायंगल की शेप में है और एक ही प्लेन में है ये तीनों. These 3 are in the same plane. क्लियर हो गया? और ये जो Cl है और ये जो Cl है, ये जो दोनों Cl हैं, one is above the plane and other is below the plane. तो it has shape trigonal bipyramidal. क्लियर हो गया? Now ये जो 3 bonds हैं which are in the same plane, these are called equatorial bonds. और ये जो 2 bonds हैं, one above the plane and other below the plane, they are called axial bonds. ठीक है? ये जो 3 bonds हैं same plane में, उन्हें हम equatorial bonds कहते हैं तीनों को. और ये जो 2 bonds हैं above the plane and below the plane are called axial bonds. जो axial bonds हैं इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, क्योंकि एक ऊपर है प्लेन के और एक नीचे है. ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ट्रायंगल की शेप में है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है. अब आती है बात इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स के एंगल की. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन, इन द प्लेन. क्लियर हो गया? और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. तो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, चाहे वो एक्सियल बॉन्ड ऊपर वाली हो चाहे वो नीचे वाली हो. ठीक है? एक बॉन्ड इस तरह से है एक प्लेन में और एक बॉन्ड इस तरह से एक्सियल बॉन्ड. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल bonds are at an angle of 90 degree. Clear हो गया? Now you know that ये जो bond pairs है सारे 5 bond pairs हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे को repel करते हैं. Clear हो गया? According to Vesper theory, bond pairs repel each other. ठीक है? तो यानी कि जो axial bonds हैं ये दोनों आपस में repel करती हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये तीनों आपस में रिपेल करती हैं, और ये जो एक्सियल बॉन्ड है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये दोनों भी आपस में रिपेल करती है. ठीक है? अब जो बॉन्ड्स एक्सियल पर हैं ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इनके बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है, तो देयर रिपल्शंस आर नेग्लिजिबल.
क्लियर, कोई रिपल्शन नहीं होगा। सिमिलरली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है, ये तीनों बॉन्ड्स जो है, इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। 120 डिग्री पर जो रिपल्शंस होते हैं वो भी बहुत मिनिमम होते हैं, उनको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, दे आर नॉट कंसिडरेबल। बट द रिपल्शंस बिटवीन एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंड repulsion between these two bond pairs are not negligible, they are considerable, clear। इन repulsion की वजह से इसकी जो शेप है या जो एंगल है या जो लेंथ है बॉन्ड्स की वो चेंज हो जाती है। अब वो चेंज कैसे होगी, ये जो एक्सियल बॉन्ड है above और below the plane, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितनी है हमारे पास, 3 है, ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड्स above और below 2 हैं, ठीक है। these two axial bonds are repelled by 3 equatorial bonds, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितनी है, 3 है, एक्सियल बॉन्ड्स 2 हैं। तो इन दो बॉन्ड्स को ऊपर नीचे वाली बॉन्ड को 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स रिपेल कर रही है। क्लियर हो गया। इसी तरह से जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये तीनों बॉन्ड्स हैं, ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल सेम प्लेन वाली, उनको 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो अबव और बिलो हैं वो रिपेल कर रही हैं। यानी जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर रिपेल्ड बाय 2 एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड्स 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपेल हो रही हैं, तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल कर रही हैं उसको, दैट मीन्स एक्सियल बॉन्ड्स एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। मोर इज द रिपल्शन, longer will be the length of bond, ठीक है, due to more repulsions experienced by the axial bonds, they are longer than इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ऊपर और नीचे वाली, इनको 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स रिपेल कर रही हैं, ठीक है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को सिर्फ 2 एक्सियल बॉन्ड्स रिपेल कर रही हैं। रिपल्शन दोनों में है, ठीक है, ये इसको रिपेल कर रही है और ये इसको रिपेल कर रही है, दोनों आपस में रिपेल कर रही हैं। तो ये जो बॉन्ड है इसको 3 बॉन्ड्स रिपेल कर रही है, जबकि इसको सिर्फ 2 बॉन्ड्स रिपेल कर रही है, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। तो एक्सियल बॉन्ड्स पर ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, ज्यादा रिपल्शन की वजह से इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी और इसकी जो लेंथ है थोड़ी कम होगी, ठीक है। सो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। थैंक यू। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत, आपने काफी अच्छे तरीके से यह प्रश्न का हल किया और निश्चित तौर से बच्चों को उनका उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए विज्ञान विषय के लिए हमारा इतना ही था। अब हम चलते हैं हमारे अगले विषय की ओर। हमारा अगला विषय अंग्रेजी विषय। तो आज के लिए हमारा अंग्रेजी का जो शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए हमारा पैनल है। सबसे पहले मंजरी मैडम, ये इंग्लिश के विशेषज्ञ हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है। Good morning everyone. Good morning students. Now today we are going to take next topic, letter writing application for job. Now this topic is related to class 9th, 10th, 11th, 12th. Letter writing is a topic which we cover in every class, and especially the application for job, which is part of syllabus of class 9th, 10th, 11th and 12th. Now this application for job comes under a formal letter, official letter category. You know that we have done before also, you must have read in your books earlier also, that we have mostly two broad categories of letters, that is formal and informal.
informal letters are written to your relatives, and formal letters are for official purpose, maybe government letters or letters for like serious conversation in offices and all, to convey that message. Now application for job, which is very much relevant in our day-to-day life. Each one of us has to grow and go into the job stream. We have to apply for job. So we need to know how to write the application for job. Now as usual, first of all, let us see the format. I have put down the format here for all of you so that you can understand it. Now we are going to write a letter. First of all, on the left side, what we are going to write is, we are going to write the address details. Okay. Now earlier the sender's address, which is our address, the one who is writing the letter, it used to be written on the top right corner. But nowadays, because of the technology, because of the computer and everything, that is why we put everything on the left side. This is the latest trend. So we are going to follow the latest trend. Okay. So we are going to write, first of all, sender's address on top left corner. Sender's our address, the one who is writing the address. Your own address, or you can make up your imaginary address, or the one given in the question in your exam. Sometimes in the question the address is given, you are, name is given, your address is given. So you have to take that and write here. Okay. Now mostly address is written in 3 lines, mostly. And from we start by writing from the smaller component to the bigger one. So first we will write the house number, okay, like C26 for example. Then we will write the locality, maybe some kind of your gully number, your village, or your community, whatever it is, or maybe your apartments. So GLF apartments, that is the, and the broader area is Chandigarh. Okay, so we have to cover 3 lines from smaller to bigger zone of area. Next, after you have given your information, next what you are going to write is date, on which date you have written the letter. Now date has a lot of importance, so that they can understand that when you have read the advertisement, and when you have, after how much time you have applied, is the letter valid or not. So you have to we have to be very careful when writing the date. So date can be written in this format as well. You can write the date in number, then month you can write in words, and year in number, so that we can differentiate, because there are 2-3 formats of writing a date, so people might not get confused. So you can write it this way. You can write the month in words. Next is the address of the receiver, one who is going to receive the letter, the company, the school, the place to which you are applying. So you have to write the address of that place. And for applying that, you have to some senior officer, some senior official, okay, the director, the principal, the chairman, someone who is SHO, whatever the person is on the highest post there, you are applying to that person. So you have to write the post. Okay, in some private companies, when you are applying for the job at those places, you can write the name also, or with proper designation, and you can write the surname, but mostly we write the post. Here the principal. Okay, suppose you are applying for the job of a teacher in a school, so you will write, whom will you write the letter to? You will write the letter to the principal. Name of the school, from smaller to bigger entity school, and where the school is located, Chandigarh. So again 3 lines address. Okay. After this you will mention the subject. Application for the post of PGT English, TGT Science, PGT Computer Science, Hindi, whatever you are applying for, PRT, JBT, you have to write the name of the post. Now subject is very important to filter the letters. Now one school has, brought out some vacancies for various posts. So if you will not write the subject here,
how are they going to segregate the letters on the basis of the post? See, primary school letters have to go to primary head. TGT will go to the middle head, and the PGTs will go to the principal to filter, to check the details, to read them out. Okay, only this is not a one man's job. So to segregate the job, we should always write the subject. After this, we are going to write salutation. When you write salutation, always remember, dear, you will write the word dear here, then sir, madam. Okay, if you know if the principal is madam, you can just write madam, dear madam. No, it is a male, you can write dear sir. So this is how you are going to write the salutation. After that, most of the official letters can be divided into 3 or you can say 4 paragraphs in all. First one, in the first paragraph, what are you going to write is, explain which job you are applying for and how you heard it. You have to write, you are applying for which job. You have written the subject, you have to mention it here. And where you have heard it, which is very important. What are your sources with reference to your advertisement in Flana newspaper, in like Times of India, in the Hindu, whatever you have, whatever the name of the newspaper is. Or I wish to, you have to use suitable phrases here to begin the letter. I wish to apply for the job in response to your advertisement. These are some, commonly used phrases which you can use here, and you can write that with reference to your advertisement from Times of India, I wish to apply for the job of PGT Computer Science, okay, or PGT English, whatever job you want to apply for. So first of all, you mention from where you heard about that vacancy and which job you are applying for, which post you are applying for very clearly. Next is briefly describe your most relevant qualification and experience. So now you have to tell your qualification and experience as per the post, the one that is required. You must have done a lot of degrees and all that, but you have to mention here only those which are required for the particular post. So you will tell about your graduation, post graduation, your diploma in education, or your any computer certificate you are applying for, computer knowledge. Okay, so all these you will tell, and also the experience, which is important to apply anywhere, because a lot of importance is given to experience. If you have worked somewhere before this, so you tell about that very clearly. Explain why you want the job. Then you can tell why you want the job, what are your reasons, and why you are good for this job, why they should hire you and not others. You can very well tell that if you are applying for a very good English medium reputed school, international school, you can tell about your education also, that you are a convent educated child and you are applying for this because of that. Then you will say how you can be contacted. So in the last paragraph you will tell that you are submitting your CV or biodata through which you can be contacted. In the end, you will close the letter by giving your name, and in the enclosure, if you have attached any CV or biodata, you will also mention that very clearly. So these are the points which you have to keep in mind for writing application for job. I hope I have made it clear. Thank you so much. धन्यवाद मंजरी मैडम, आपने काफी विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दिया और बच्चों को यह प्रश्न निश्चित तौर से समझ में आ गया होगा। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये शंका समाधान कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए और अब घर पर बैठे हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपने जितनी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा या अन्य विभागों द्वारा कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखिए, उन पर अमल कीजिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।